ऐड करेंगे। For question number 14, it looks similar to question number 12, but when you see it carefully, there is a big difference between question number 12 and 14. So for this question number 14, the same diagram will be drawn here as in question number 12. Triangle ABC and triangle PQR. AD is median here and PQ is median here. What is given here? Sides AB and AC and median AD of triangle ABC. Here AB by PQ is equals to AC by PR is equals to AM by AD by PQ. Means ratio of the sides AB, AC and median AD of triangle ABC to the sides PQ, PR and median PQ of triangle PQR are equal. So see, in question number 12, instead of this AC by PR, there is BC by QR. So that was easy. But here the ratio of these two sides and median is equal. So here we have to do construction. And what we have to prove? We have to prove same question. Triangle ABC is similar to triangle PQR. In question number 12, the question was same. And in the question number 14, to prove is same. So here we do some construction. What will be our construction? In construction, AD is produced to E such that AD is equals to D. B and EC are joined. B and EC are joined. In the same way, PQ is produced to F and QF and FR are joined. This is equals to this. So in construction, AD and PQ are produced to E and F such that AD is equals to D and PQ is equals to QF. B, EC, QF and FR are joined. See here, in construction, what shall we do here? AD is produced T such that AD is equals to D, and here PQ is produced to F such that PQ is equals to QF. And already this BD is equals to CD, and what is this? This is PM. AD and PQ, not PQ, PM. AD and PM are produced to E and F such that AD is equals to D and PM is equals to MF. PM is equals to AM, MF. B, EC,
QF and FR are joint. Okay. Now see here in this figure, BD equal to CD already given because AD is median and AD is equals to D by construction, and of ABEC a quadrilateral. ABEC is a quadrilateral and its diagonals are bisecting here. So ABEC will be a parallelogram. Similarly, PQFR will be a parallelogram. So here we will write in proof. Since AD is equals to DE and BD equal to CD, therefore ABEC is a parallelogram. Similarly, PQFR is a parallelogram. जब ABEC parallelogram है तो PQFR भी क्या होगा, एक parallelogram होगा. अगर ये पैरेललोग्राम है तो व्हाट वी सी हियर कि दिस AB साइड विल बी इक्वल्स टू EC. Therefore AB equal to EC and PQ equal to FR. Opposite sides of parallelogram. Opposite sides of parallelogram are equal. ध्यान से देखो, AB इक्वल है EC के और PQ इक्वल है FR के. नाउ जो रेशियो गिवन है उसको देखो. हियर AB by PQ is equals to AC upon PR is equals to AD upon PQ. तो व्हाट शैल वी डू हियर. देखो AB किसके इक्वल है, EC के, पुट हियर. PQ किसके इक्वल है, FR के, पुट हियर. AC बाई PR और देखो AD बाई PQ में अगर 2 यहां लिख दो, 2 यहां ले लो, इट इज गिवन. दिस इज आवर गिवन रेशियो. We can write here 2 by 2. We can write here 2 by 2. तो twice of AD means AD का डबल क्या हो जाएगा, AE, और PM का डबल क्या हो जाएगा, AD by PM. यहाँ पे होगा AD by PM. What will be twice of this PM? देखो PM का दुगना क्या होगा, PF. तो here we can write AE upon PF. Now see this ratio. इस रेशियो को देखो, EC अपॉन FR, AC अपॉन PR and AE upon PF. Therefore we can write here triangle AEC is similar to triangle. This AEC is similar to triangle PFR. Triangle PFR. It is by side similarity. By triple S similarity. So when these two triangles are similar, when AEC is similar to triangle PFR, when AEC is similar to PFR, we know already that when two triangles are similar, then their corresponding angles will be equal. It means
this angle will be equal to this angle. We can say angle CAD, therefore angle CAD will be equals to angle RPM. Why? This is corresponding angles of similar triangles. Corresponding angles of similar triangles. These are the corresponding angles of similar triangles. So note it first. Write it equation number first. Write it equation number first. सर हो गया। सर आपका आवाज नहीं आ रहा। नेटवर्क कनेक्शन। हाय, हेलो, हाँ जी, यस। सर जब बता रहे थे वहां से सिमिलरी से, तो वहां से आवाज नहीं आ रहा था। ठीक है, तुम अपना चेक करो, आवाज जा रही थी। अब आ रहे हैं सर, जब बता रहे थे तो नहीं आ हाँ रहा था ठीक है, वहां से। उस समय भी जा रहा था, मैंने कुछ किया नहीं है। तो shall I erase it construction part? Hello student. Yes, sir. यस सर। Yes, sir. यस सर। See here, so like this, hello, like this AEC, as we have proved AEC is similar to triangle PFR, so we can write here similarly this side's triangle means AEB will be similar to PFQ. Therefore similarly triangle AEB will be similar to triangle PFQ. It will be also by triple S similarity. So when this triangle AEB will be similar to triangle PFQ, then this angle will be equal to this angle. So angle BAD will be equals to angle QPM. Why? Because corresponding angles of similar triangles. And write it equation number 2. Now add equation 1 and 2. On adding equation 1 and 2, when we add these equations, yes, आपका वीडियो लैग कर रहा है। check. यस सर, वीडियो लैग कर रहा है सर, वो बोला सर आवाज। Okay, so what can I do, beta? ये तो it is problem of network. I can't do यस anything. सर। Wait for clear video. सही है।
Okay. सर क्लियर आवाज आ है। रहा है? Somewhere it may be a problem, but nothing can be done from my side, beta. You have to wait. And if there is more problem, then I can leave this, end this meeting. See here, when you add equation 1 and 2, so in one it is angle CAD Video angle has paused. plus angle CAD plus angle BAD. Angle BAD will be equals to angle RPM plus angle QPM. So when you add these two angles, see here CAD plus BAD, it will become angle A, and angle this RPM and QPM means angle P. So here we get angle A is equals to angle P. But this AB by AC, AB by PQ is equals to AC by PR is given already. So see here angle A is equals to angle P here, and AB by PQ is equals to AC by PR. So triangle ABC is similar to triangle PQR by which similarity? By side angle side similarity. SSS. SAS. SAS. Can we write here triangle AB? Side angle side. We can write here triangle ABC is similar to triangle PQR. It is by side angle side similarity. Proved? सर दिखाई नहीं दे रहा है, एकदम धुंधला दिख रहा है सर। अरे बंद करके लीव करो, लीव मीटिंग। कृष्णा सिंह, लीव मीटिंग, लीव द मीटिंग, अगेन ज्वाइन इट। ओके सर। This question is some special question, because here if you not keep the construction in your mind, then you can't prove it. Students, remember it, this question is special because it has a trick, means you have to do the construction. If you will not construct this, you can't solve it, because there is no other method to prove this question. You have to just prove equal these two angles. Angle A is equals to angle P by any method. And without this method, you can't prove. Okay. Maybe you will not complete this quadrilateral. Just you can draw one side of this triangle. But you have to do this much. So keep in mind, इसको ध्यान से करो, ये थोड़ा सा अलग हट के क्वेश्चन है, ठीक है। बाकी तो फिगर वगैरह सब आसानी से बन जाता है, वो हो जाते हैं। Is it completed? Hello. Yes sir. Yes, sir. Yes, sir. Krishna Singh, Yes, sir. now tell. Hello. Krishna Singh. Hello. Krishna Singh. Krishna Singh. बोलिए, वो सुन रहा है। कृष्णा सिंह, आवाज आ रही है? हेलो। सर वो नहीं है इस मीटिंग में।
है लेफ्ट हो गया। लेफ्ट हो गया। चलता है, बस बोलता है। Yes. okay, no problem. So Left, students, left. see, our this chapter is this exercise is finished, and I think this areas of similar triangle, I think this portion is uh, deducted by the board, but we will study it because it is very important. सिमिलरिटी पढ़े हम लोग और उसका कुछ हिस्सा जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो ना पढ़े तो कोई लाभ नहीं। ठीक है, तो एग्जाम में जब प्रिपरेशन की बात होगी फॉर फाइनल एग्जामिनेशन, देन वी विल लीव दो टॉपिक्स विच विल नॉट कम इन द एग्जामिनेशन। जो एग्जाम में नहीं आएगा उसे हम उस वक्त छोड़ देंगे, अभी उसको पढ़ लेते हैं। ठीक, ओके, एनी प्रॉब्लम? यहाँ देखो क्या हो रहा है कि जो पोर्शन नहीं है वह भी हम लोग पढ़ लेते हैं, लेकिन जब फाइनल प्रिपरेशन की बारी आएगी बोर्ड की तो उस वक्त क्या करोगे, जो पोर्शन डिडक्टेड है, जो नहीं आएगा उसको छोड़ के रिवाइज कर लेना। ओके, तो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स। सर यस, हाँ जी बोलो, स्कूल खुलेगा? कौन है बंधु? हेलो, यस सर, हाँ बोलो। स्कूल खुलेगा? बेटा अब तो देखो, अब टीवी तुम भी देख रहे हो, टीवी मैं भी देख रहा हूँ, स्पेशल तो कोई गाइडलाइन नहीं आया हुआ है। जो टीवी में कह रहा है ना, तो टीवी में देख रहे हो न्यूज वगैरह? जी सर। क्या कह रहा है? नहीं खुलेगा। नहीं खुलेगा। तो नहीं खुलेगा, अक्टूबर से खुलेगा। हाँ अक्टूबर से। तो देखो, अब देखो ऐसा है कि कोई स्पेशल गाइडलाइन स्कूल में नहीं आ रहा है, वो टेलीविजन पे जो न्यूज में चल रहा है, नहीं खुलेगा। कोरोना केसेस आर नाउ कमिंग 90,000+ एवरी इन 24 आवर। हर 24 घंटे में 90,000 के पार आ रहा है, धीरे धीरे खुलेगा। सर कुछ तो फेक भी हो रहा है उसमें। सुनो, लिसन मी, जो भी हो रहा हो, आपका स्कूल चलेगा। जो बोर्ड के एग्जामिनीज हैं, ये जो एग्जाम्स वगैरह हो रहे हैं ना, फॉर व्हाट कंपार्टमेंट एग्जामिनेशन डेट हैज कम। आवर कंपार्टमेंट एग्जामिनेशन इज फ्रॉम दिस 21st of September। तो जब ये कंपार्टमेंट एग्जाम सीबीएसई करा लेगी, और भी बहुत सारे एग्जाम्स इस मंथ में चल रहे हैं, तो देन आफ्टर स्कूल खुलेंगे, प्रिकॉशंस रहेंगे, मास्क लगाना होगा, सैनिटाइजर रखना होगा, वगैरह वगैरह। समझ गए? तो वेट फॉर दैट। देयर इज नो क्लियर डेट इज गिवन बाय सीबीएसई और बाय गवर्नमेंट। सीबीएसई के बस का तो अब है नहीं, ये तो गवर्नमेंट ऑर्डर आएगा। तो गवर्नमेंट ने कोई क्लियर सूचना अभी नहीं है कि कब से खुलेगा। ठीक है, लेकिन गवर्नमेंट इज प्रिपेयरिंग। जूनियर्स का तो पता नहीं, अभी किसी का भी पता नहीं। थ्योरम नंबर 6.6, रेशियो ऑफ the ratio of areas of two similar triangles equal to Yes sir. the ratio of square of their corresponding sides. See here, the ratio of the areas of two similar triangles is equal to the ratio of square of their corresponding sides. It means, let here a triangle is given ABC and another triangle is given PQR. So what is given here? Given here कि triangle ABC is similar to triangle PQR, and we have to prove area of triangle ABC
by area of triangle PQR. This will be equals to the ratio of the square of their corresponding sides. So if we take AB, so here AB square by PQ square, or BC square by QR square, और AC स्क्वायर बाई PR स्क्वायर. मतलब तीनों साइड में से किसी के स्क्वायर के रेशियो के बराबर होगा. तो डू हियर वन कंस्ट्रक्शन. यहाँ कंस्ट्रक्शन करते हैं हम लोग. AD परपेंडिकुलर टू BC एंड PM परपेंडिकुलर टू QR is drawn. AD perpendicular BC and PM perpendicular QR is drawn. Now in proof, see here, area of triangle ABC by area of triangle PQR. We know area of a triangle is equals to 1 by 2 base into height. So if you take triangle ABC, so here half BC into height is AD, and here 1 by 2 The fuck, man. QR into PM. This half and half will be cancelled. So we get here BC by BC upon QR into AD by PM. Write it equation number first. Write it equation number first. Now, but we need what? Area of triangle ABC by area of triangle PQR is equals to AB square by PQ square, BC square by QR square, AC square by PR square. It means if you prove AD by PM is equals to BC by QR, then it will become BC square by QR square. So see here, in triangle ABD, and triangle PQM, angle B is equals to angle Q. Why? See here, angle B is equals to angle Q. Why? ये दोनों एंगल बराबर होंगे. क्यों होंगे? नहीं रहा है. Angle ADB will be equals to angle PMQ is equals to 90 degree each, and these are corresponding angles of similar triangle. Corresponding angles of similar triangle. So see here, in both the triangles, in triangle ABD and in triangle PQM, two angles are equal, so both the triangles will be similar. Therefore, triangle ABD will be similar to triangle PQM. It is by angle-angle similarity. Therefore, here AD by PM will be equals to AB by PQ. But triangle ABC is similar to triangle PQR. So therefore, this AD by PM will be equals to AB by PQ is equals to BC by QR. See here, AD by PM is equals to AB by PQ, but both the triangles ABC is similar to triangle PQR. It means there all the sides will be proportional. All the sides of triangle ABC will be proportional to all the sides of triangle PQR. So here it is proved AB by PQ, it means BC by QR. Let it equation number 2. Now put the value of AD by PM here. अगर AD by PM का वैल्यू यहाँ BC by QR बैठाओगे तो ये क्या बन जाएगा? BC स्क्वायर by QR स्क्वायर.
ये फिगर अगर हो गया हो तो आई विल राइट हियर. Have you noted this figure? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. So from here we will write here from equation 1 and 2. From equation 1 and 2, area of triangle ABC upon area of triangle. सर Yes, सर एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल पीक्यूआर के आगे क्या लिखे हैं? half BC into AD 1 by 2 BC into AD and denominator 1 by 2 QR into PM. तो 1 by 2 and 1 by 2 will be cancelled here. तो बच जाएगा यहाँ BC Yes. by QR into AD by PM. ठीक So here we get BC by QR, and from equation 2 AD by PM is equals to again BC by QR. So we get here BC square by QR square. See here, triangle ABC is similar to triangle PQR. So when this ratio is equals to BC square by QR square, so we can write therefore area of triangle ABC upon area of triangle PQR will be equals to AB square upon PQ square is equals to BC square upon QR square is equals to AC square upon PR square. Proved. सर एक बार और रिपीट कर दीजिए. Okay, noted. फिर मैं repeat करता हूँ. See here once again, theorem is saying that if two triangles are similar, then the ratio of their areas will be equal to ratio of square of their corresponding sides. The ratio of the areas of two similar triangles is equals to the ratio of the square of their corresponding sides. ये कौन पैदा हो गया भाई? गुरु रंधवा कौन है भाई? Who is this? तो सी हियर फिगर में हमने क्या किया, एडी परपेंडिकुलर बीसी एंड पीएम परपेंडिकुलर क्यू ड्रा कर लिया. रेशियो ऑफ दिस एरियाज, ratio of the area of two triangles will be equal to 1 by 2 BC into AD, and in denominator half QR into PM. So half and half will be cancelled, we get BC upon QR into AD by PM. अब हमें क्या प्रूफ करना है? देखो अगर BC by QR equals to AD by PM अगर प्रूफ हो जाए तो ये BC स्क्वायर अपॉन QR स्क्वायर होगा. फॉर दैट हमने क्या लिया? ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल PQM. इन दैट we get B equal to C, B equal to Q angle and ADB equals to PMQ 90 degree. So two angles are equal, it means both the triangles are similar by angle similarity. So here we get AD by PM
is equals to AB by PQ, but AB by PQ is equals to BC by QR because triangle ABC is similar to triangle PQR already given. अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है तो इनके सारे साइड का रेशियो इक्वल होगा। तो AB by PQ के इक्वल हमने BC by QR रख लिया। अब इक्वेशन ये फर्स्ट था और इक्वेशन ये सेकंड था। यहाँ से AD by PM के जगह इस AD by PM के जगह BC by QR हमने बैठा लिया यहाँ। सी हियर BC by QR, तो ये बन गया BC स्क्वायर बाई QR स्क्वायर। लेकिन देखो इसका रेशियो हमने एक साइड के स्क्वायर के रेशियो के बराबर प्रूफ किया, हमें ये तीनों के बराबर प्रूफ करना है। तो जब दोनों ट्रायंगल सिमिलर है तो इनके सारे साइड्स का रेशियो बराबर होगा, इसलिए सबके रेशियो का स्क्वायर ही इसके रेशियो के बराबर होगा। ओके, सो स्टूडेंट्स ये जो भी थ्योरम्स प्रूफ किए जाते हैं यहाँ पे रिपीट वंस अगेन एट होम, उसको थोड़ा समझने की कोशिश करो तो आसानी से समझ में आएगा। और फिर इसके क्वेश्चंस एग्जांपल्स को देखोगे, इसके क्वेश्चंस कल किए जाएंगे। ओके, सो बाय बाय फॉर टुडे।